સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં રખડતા કૂતરાઓને લઈને સુનાવણી પૂર્ણ કરવામાં આવી। 3 જજની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં એમિકસ ક્યુરી, એનએચએઆઈ અને કેન્દ્ર સરકારે જવાબ રજૂ કર્યો। 14,000 સંસ્થાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે। એમિકસ ક્યુરીએ પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો, જેમાં આ જવાબ જણાવવામાં આવ્યો। તેમણે કહ્યું કે 1,145 રખડતા કૂતરાઓને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા। સુપ્રીમ કોર્ટની ખંડપીઠે આંકડાઓ પર ટિપ્પણી કરી કે વર્ષ 2024માં 1 લાખથી વધુ કૂતરા કરડવાના કેસ જે છે તે નોંધાયા હતા। આ સમગ્ર मामले વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता अजय यादव। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में चल चुकी है या बढ़ चुकी है। इसके पहले जो है एनजीओ या तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से तर्क रखे गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ टिप्पणियां सख्त रूप से रखी थी और जिसमें ये कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बूढ़े और बच्चे किसी भी सूरत में जो आवारा कुत्ते हैं उसके शिकार हों। लेकिन अब धीरे धीरे प्रक्रिया जब आगे बढ़ी है तो अब राज्य सरकारों को मौका दिया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार, एमिकस क्यूरी जो है और एनएचएआई, यानी इन लोगों को अपनी बात रखनी है। और आज ये देखा गया कि सभी राज्य सरकार की तरफ से जो न्याय मित्र थे, यानी एमिकस क्यूरी थे, जो उनकी तरफ से आभार समग्र माहिती आपवा માટે अजय।